Hello everyone, how are you all? I hope you all are staying strong at your home. दोबारा लॉकडाउन लग गया है, so stay home, stay safe, okay? And now we will continue our chapter Human Migration with its Something to Know Part E. Answer the following question. We will also do Part F, Solve the Grid and Map skill of this chapter. Okay, so without wasting any time, let's start Part E. Answer the following question. First question is briefly highlight the three types of migration. तीन तरह की migration आपने पढ़ी हुई है. So three types of migration are सबसे पहले forced migration, voluntary migration and seasonal migration. So what is forced migration? Forced migration is the movement of a person, family or large group of people due to natural disaster or due to man-made disaster. So when people are forced to migrate, that is forced migration, and the reason can be natural disaster or the man-made disaster. Now second type of migration is voluntary migration. Voluntary migration is when people move to another place on their own wish or their own choice. जब अपनी पसंद से, अपनी wish से हम migrate करते हैं तो उसको हम voluntary migration कहते हैं. Now the last third type of migration which is in your book is seasonal migration, and seasonal migration is when people move for the particular season for the purpose of employment. So when the people are going in search of employment or jobs away from their native place during the particular season के लिए जा रहे हैं वो सिर्फ हार्वेस्टिंग या फिर सोइंग ऑफ क्रॉप, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड सीजनल माइग्रेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 हार्डशिप्स दैट द माइग्रेंट्स फेस. माइग्रेंट्स जो होते हैं वो कौन सी 3 मुश्किलें फेस करते हैं ये हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, hardships that the migrants face are migrants live far away from their family members. वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को छोड़ करके दूर जा कर के रह रहे हैं, अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहते हैं. So this is the first hardship. Then second is their children do not get education if they move with their family. तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती and they have to live without basic amenities like shelter, sanitation and safe drinking water. Now question number 3, migration brings happiness to many people. Explain with 2 example. हमें 2 examples देने हैं और बताना है कि माइग्रेशन जो है वो हैप्पीनेस लेकर के आती है बहुत सारे लोगों के लिए. So yes, migration do bring happiness to many people, especially when it comes to voluntary migration. Forced migration हैप्पीनेस नहीं लेकर के आती है, बट जो वॉलेंट्री माइग्रेशन होती है और जो सीजनल माइग्रेशन होती है उसमें दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन ऑफ कोर्स ब्रिंग हैप्पीनेस. सीजनल माइग्रेशन में द पीपल यूज टू गेट बेटर जॉब्स एंड बेटर वेजेस, तो वो हैप्पीनेस लेकर के आती है. यहाँ पे मैंने सीजनल माइग्रेशन को नहीं ध्यान में रखा है, मैंने ओवरऑल दिया है 2 पॉइंट्स. सो माइग्रेंट्स सी न्यू प्लेसेस and experience climate that suits them. नई तरह का climate experience करते हैं, नई जगहें वो देखते हैं, and they also learn about new customs, traditions, cuisines, dresses, dances, music, etc. जिस भी न्यू प्लेस में वो जा रहे हैं वहाँ का कैसा ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है, किस तरीके की क्यूजीन है वहाँ पे, कैसी ड्रेसेस पहनी जाती हैं, व्हाट टाइप ऑफ डांस एंड म्यूजिक पीपल एंजॉय देयर, तो वो सब कुछ जो है वो एक माइग्रेंट एक्सपीरियंस करता है. एंड दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस डू ब्रिंग हैप्पीनेस टू मेनी पीपल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू हैव टू माइग्रेट टू अनदर सिटी, लिस्ट 2 प्रिपरेशन दैट यू विल मेक. मान लीजिए कि आपको दूसरी सिटी में माइग्रेट करना है, तो कौन सी 2 प्रिपरेशन आप करेंगे. सो व्हाट आई बिलीव इज 2 प्रिपरेशन दैट आई विल मेक आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स. पहले मैं अरेंज करूँगी कि जो हाउस होल्ड थिंग्स है मेरे, मैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकूँ. एंड सेकेंडली, जिन चीज़ों को मैं ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेकर के जा रही हूँ उन्हें वहाँ रखने के लिए एक सूटेबल और अफोर्डेबल accommodation होना चाहिए. That's why the second point is find a suitable and affordable accommodation in that new place. So these are the 2 preparation that I will make.
Now question number 5 is, what facilities are needed by people in case of the disaster? जब कोई disaster hit करता है तो कौन कौन सी facilities लोगों को required होती है? तो facilities needed by people in case of disaster are, first of all they need a safer place to live. उन्हें shelter चाहिए, उन्हें एक safe place चाहिए जहाँ पे वो safe feel भी करें, क्योंकि वो disaster hit किया है जहाँ पे वो थे. तो जब आप डिज़ास्टर फेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड अ शेल्टर, देन food and safe drinking water, then sanitation and clothes, and of course if they are hit by the disaster so medicines are also required. So these are the few things which are required, few facilities which are needed by the people in the case of disaster. Now let's continue with question F, solve the grid. Here in this question we are supposed to encircle 10 words related with the chapter human migration, and then we are supposed to list them down, and one is already done and that is agriculture. Agriculture पहले से ही किया हुआ था, and this is the agriculture which was already done. Now next is flood, and this is floods. Then nomad is on the very first line, nomad. Then migrant, here we are having in the very first column we are having migrant. Then migration is here. Then forced, this is forced. Then employment, one second, ये forced का F जो है मैं दोबारा करती हूँ, this is forced. Then employment nomad के ठीक नीचे से start होता है, migrants तक हमें लेकर के जाता है. Then shelter is here, जो agriculture है उसके next U से start के next जो है S से वहाँ से start होता है. Then hardships is exactly under the migration here. Then last is seasonal is here, agriculture का जो last E है वो seasonal में जाकर के contribute करता है. So these are the 10 words: agriculture, floods, nomads, migrants, migration, forced, employment, shelter, hardships and seasonal. Now let's move to the next, that is map skill. So on the political map of India, we are supposed to locate these answers of these questions. Very first is the northernmost state which witnessed flood in 2014. So that was the time when Jammu and Kashmir used to have statehood, but now, as I have mentioned it here, now union territory. Now it is a union territory. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. So this is the location of Jammu and Kashmir in the northernmost region. Now next, number 2 is a state which witnessed Hudhud flood. So Hudhud floods जो है, बहुत सारे लोग इसका आंसर ओडिशा भी बोलते हैं. बेटा जो हुदहुद साइक्लोन है उसने वो यहाँ आंध्र प्रदेश में आकर के विशाखापट्टनम में हिट हुआ था, और उसके बाद जो इसकी आफ्टर वेव्स थी वो ओडिशा तक भी गई थी. बट बेसिकली ये जो है ये विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में ही हिट हुआ था. तो हमारा आंसर इज गोइंग टू बी आंध्र प्रदेश ओनली. सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, and this is the location of Andhra Pradesh. Now number 3 is a state which supplies labor to agricultural state. तो आपने मैक्सिमम देखा होगा कि ज़्यादातर जो लेबरर होते हैं they come from Bihar. Then next is, this is our last map skill, a city that attracts migrants from rural areas. तो हमने एक स्टोरी की थी. This story was about a migrant who was a blacksmith and his name was Shyam, who was from Uttar Pradesh, Chandusi village से था, and he moved to Lucknow. And at that time also I have explained that usually people used to migrate to the capital cities.
वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या तो वो उसकी कैपिटल सिटी में माइग्रेट करते हैं या फिर वो जो हमारी कंट्री की कैपिटल है वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन न्यू दिल्ली विच इज़ इन दिल्ली. So you can locate Delhi here. This is all about this chapter. Bye bye. Take care everyone.